हर हर महादेव. Do you know the real meaning of हर हर महादेव? हर हर महादेव literally means that everybody can be महादेव. हर हर महादेव का ये भी अर्थ होता है कि हर एक इंसान अपने आप में खुद में एक महादेव है. संस्कृत में हर शब्द का अर्थ होता है विनाश. अपनी उच्चतम चेतना को प्राप्त करने के लिए हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, हमारी नेगेटिव जो वाइब्स है, उसको खत्म करने के लिए महादेव हमें प्रेरणा देते हैं. ऐसा भी हर हर महादेव का अर्थ होता है. इनफैक्ट महादेव इज नॉट ओनली द नेम ऑफ द गॉड. महादेव इज प्रोसेस ऑफ बीइंग अ गॉड. महादेव is a Swayambhu. We often call Mahadev a Swayambhu god. Swayambhu god means the god who is created himself to the level of the god. Number 1, self-control is the key. महादेव ने अपनी खुद की जिंदगी को एक तपस्या बनाया. उनका कहना था कि control over 5 senses is the key of the healthy mind. With the practice of meditations, Mahadev achieved the control over the 5 senses. Mahadev always prefers to live in the lonely places to make his practices of the meditation. Our Asian text says that if you can control the hunger, you can literally control your life. In fact, Mahadev always prefers to eat the root vegetables or green vegetables or cold milk. That means Mahadev always prefers to eat the less processed food. The less processed food is the key as according to him. It shows that Mahadev had controlled the most important sense, that is our tongue. Mahadev always teaches that if you can control hunger, you can control your mind too. We often see Mahadev wearing a tiger skin. What is that tiger skin? That tiger skin shows that Mahadev won the battle of the mind. That battle is between the bad habits like animals the human have. That's why Mahadev always wears a tiger skin. It shows that Mahadev have a control over the animal instincts like anger, greed, lust. That's it. Number 2, materialistic happiness never stays for long. When we see other gods of the Hindu mythology and the Bhagwan Shiv, we often see that other gods are wearing jewelries, wearing costly dresses, living in the mansions. And similarly, Mahadev is living in the Himalaya, wearing the tiger skin, eating the raw food. This shows that Mahadev is saying that materialistic happiness never stays for long. हम जब भी महादेव को देखते हैं तो उनके पास अपना एक डमरू रहता है, उनका त्रिशूल रहता है और टाइगर स्किन के साथ वो दिखाई देते हैं. तो उनका यही कहना था कि materialistic things never stays for long. Accordingly, materialistic happiness is also never stays for long. That means if we are assuming that if I got something that is costly and I become happy, so that is the illusion. Point number 3, respect your better half. Shiva is also known as the Ardhanari Nateshwar, where half of him is known as the Mata Parvati. We often see Mahadev and Parvati together in most of the pictures. It clearly shows that Mahadev have a huge respect towards Mata Parvati. Mata Parvati have equal decisions powers as Mahadev have. Point number 4, love the nature. Mahadev lives on the Kailas Parvat in the Himalayan range. वो गले में सर्प को धारण करते हैं, कम से कम प्रोसेस फूड खाते हैं, जटा में गंगा को धारण करते हैं. दिस क्लियरली शोज दैट महादेव लव्स द नेचर. वैसे तो महादेव से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं. इस श्रावण मास में महादेव की भक्ति करने के लिए उपवास करने के बजाय अगर हमने उनके दिखा हुए मार्ग पर चलना भी सीख लिया तो वो सबसे बड़ी भक्ति होगी. अगर हमने एक पेड़ भी लगाया तो महादेव प्रसन्न होंगे क्योंकि वो नेचर्स को प्यार करते थे. अगर हमने कम से कम प्रोसेस फूड खाया जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है तो वो भी एक महादेव की भक्ति होगी. हमने खुद की सेहत का ध्यान रखा तो वो भी महादेव की एक भक्ति होगी. हमने मटेरियलिस्टिक थिंग्स से डिटैच कर लिया तो महादेव की वो भक्ति होगी. रिमेंबर, हर हर महादेव. एवरीबडी कैन बी महादेव. आई कैन बी महादेव, यू कैन बी महादेव. बिकॉज
Mahadev is the name of the process of being a god. Mahadev is the name of the process of achieving the mental peace, physical fitness. Mahadev is a process of loving the nature. Har Har Mahadev.